You're watching Reality Check. Tonight we interrogate claims being made by both sides of the raging debate over the new Farm Bill. The government says this is going to be a 1991 moment for Indian farmers, with a rush of private players entering into the countryside. But it's worth pointing out that some of the biggest corporate names in India have already been buying from farmers for over a decade. Whether it's Reliance, the Birlas, Future Group, Big Basket, the list is endless. Despite that, one statistic tells us that the share of the organized sector of the retail market of all these big players is anywhere just between 2 to 4%. Anywhere between 96 to 98% is still the unorganized small kirana dealer and the thelewala. On the other hand, the critics of the bill say that this is going to be devastating for farmers. So why are some farmers not protesting? My colleague Maryam Alavi and I travelled to Panipat in Haryana to unravel the complex realities of the Farm Bill. Panipat, Haryana, 3 hours northwest of Delhi. We have come to a collection centre for Big Bazaar, the mega food chain. Almost every 20 minutes, local farmers bring their produce. It is weighed, they get a receipt and are paid at the end of the week via bank transfer. The nearest major mandi 13 kilometers away is a much older and bigger hub, but farmers prefer to sell here. मंडी में क्यों नहीं जा रहे हैं? मंडी से इससे यहाँ क्या बेटर मिल रहा है आपको? मंडी से जी एक तो जी टाइम बचा है। अच्छा, मंडी कितना दूर है यहाँ से? मंडी जी आता है 15 किलोमीटर। अच्छा, और आपका खेत यही आप बता रहे थे? हाँ जी। ये सटा हुआ खेत आपका हाँ है? जी। अच्छा, एक तो टाइम बच गया। हाँ जी। और दूसरा? दाम बढ़िया मिला जी। दाम। अच्छा, दाम एक एक करके सब्जियों का ये जो बताएं कितना, इसका क्या दाम मिल रहा है आपको? ये 12 रुपए के। ये लौकी का। और मंडी में? ऐसी 80-100 रुपए की पन्नी है। 80-100 रुपए की पन्नी। एक पन्नी में 25 से 30 किलो आता है। हाँ। अच्छा, तो वो तो 100 रुपए for 30 kilos means around less than about 3 rupees or so. बैंगन का क्या रेट मिल रहा है यहाँ? 10 रुपए किलो। और मंडी में क्या मिलेगा आपको? 4-5 रुपए किलो। 4-5 रुपए किलो। और ये तोरी? तोरी यहाँ तो 20 रुपीज है मंडी का, तो यहाँ पे 20 रुपीज पर किलो है। और अच्छा, मंडी में कितना होगा? मंडी 15 से 16 रुपए होगा। The men who coordinate centers like these say the price is fixed every day based on the prices at Delhi's Azadpur Mandi. कि आप यहाँ सब्जियों का प्राइस कैसे फिक्स करते हैं? यस तो ये आप कह रहे थे यू कंपेयर दिस टू आजादपुर मंडी से कंपेयर करके, तो कैसे करते हैं वो जरा बताओ। आज़ादपुर मंडी से इसलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि आज़ादपुर मंडी एक बहुत ही बल्क मंडी है, उसमें प्राइस का वेरिएशन बहुत अप एंड डाउन बहुत कम रहता है, जबकि कंपैरिजन टू पानीपत, क्योंकि पानीपत में क्या है, अगर यहाँ पे सब्जी की क्वांटिटी अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाए, यानी कहने का मतलब अगर 2 गाड़ी की जगह 4 गाड़ी आ जाए, तो जो प्राइस अगर 10 रुपये चल रहा था तो वो प्राइस गिर के लगभग 5 रुपये या 4 रुपये के आसपास ही आ जाएंगे। और कई बार तो मैंने खुद ने भी ऐसे ऑब्जर्वेशन किया है और किसान भाइयों ने भी किया है कि ज़्यादा मात्रा में आने के बाद में कई बार तो किसान अपना माल गौशाला के अंदर भी डाल के आए हैं। Unlike their counterparts elsewhere in Punjab and Haryana, these farmers are not protesting. For one, they mainly grow vegetables and fruits, not protected by the government's minimum support price, the trigger for the Farm Bill protests. From whatever they have heard, they welcome the new law. एक चीज आप लोगों से पूछना था कि आप तो देखा होगा कि कोई नया किसान का कानून लागू हुआ है, उसके वजह से कुछ किसान भाई जो हैं वो आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपने उसके बारे में कुछ सुना है? अच्छा, लेकिन आप उसके विरोध में हैं या नहीं? उसके विरोध में नहीं है। नहीं। आप विरोध में हैं? नहीं। उसमें थोड़ा है बस। वो क्या वजह है, क्या विरोध में नहीं है? वो कान लगा लो, इसमें तो इसी तरीके का होता है ना, जिस तरीके का सेंटर है जी, बिचौला हट जाओगा बीच में है, अब अपनी फसल में जिम्मेदार कहीं बेच लेगा। आप उसके विरोध में क्यों नहीं है? क्यों आपको लग रहा है कि ये ठीक है? हमें खुद प्रॉफिट है जी इस चीज़ का, क्योंकि हमारे पास यहाँ ये प्राइवेट सेंटर हैं जितने, तो हमने ये पहले अभी हुए हैं 2-3 साल से 4 साल से हमने इसका प्रॉफिट देखा है, एक एक करके। इसलिए हम चाह रहे हैं कि और भी यहाँ सेंटर खुला है और यहाँ और भी ज़्यादा होगा हमने, क्योंकि किसानों ने जितने भी होंगे तो प्रॉफिट है। But it's unclear what changes the bill will bring here.
private players say they've been here for years and have faced no problems. ये जो सेंटर हैं, ये कब से कितने सालों से चल रहे हैं? ये कलेक्शन सेंटर पानीपत में लगभग 12 यानी कि अगर टोटली अगर एज ए सेंटर ऐसे मानूं तो लगभग ये 5 से 6 साल से चल रहा है और वैसे ये 10 साल से चल रहा है बिग बाजार का। 10 साल से बिग बाजार का चल रहा है? यस सर। और यहाँ तो जी कम टाइम पे ही है, 4-5 साल। अच्छा, ये जो सेंटर है 4-5 साल से, पर वैसे बिग बाजार जो यहाँ से परचेजिंग कर रहा है वो लगभग 10 साल से लगा डेली वो कर रहा है। तो कैसे आप इसको चला रहे हैं? क्या परमिशन लेना पड़ता है? ये सर बापोली कृषि मंडी है, वहाँ से एक लाइसेंस जारी होता है। ये पास की मंडी है ये कोई? यहाँ से लगभग 3 to 4 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ से मार्केट कमेटी बोलते हैं, वहाँ से लाइसेंस जारी होता है। वो लाइसेंस एज ए कंपनी के नाम पे जारी होता है। वो लाइसेंस मिलने के बाद के अंदर और लोकेशन वो चेक करने के बाद के अंदर फार्मर से आप माल परचेज कर सकते हैं जब वो लाइसेंस जारी हो जाता है। और ये लाइसेंस मिलने में कितना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं? नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो मार्केट कमेटी के जो लोग हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर के आदमी हैं और वो काफ़ी वो चाहते हैं कि किसानों का यहाँ डेवलपमेंट हो। बिग बास्केट है, रिलायंस है। If anything, their numbers have increased. कितने यहाँ कलेक्शन सेंटर कितने होंगे? बहुत सारे, 6-7 के आसपास। 6-7 हैं। कौन कौन है यहाँ? गो फ्रेश हो गया, देहात हो गया, उड़ान हो गया, रिलायंस हो गया, उसके अलावा मोर हो गया, बिग बास्केट हो गया, मदर डेयरी हो गई, उसके अलावा निंजा कार्ट हो गया। तो लगभग यहाँ पे 8 to 9 कलेक्शन सेंटर इस टाइम करंटली वर्किंग कर रहे हैं। और यही इसी रोड इसी एरिया में। इसी एरिया में। टोटल जो रेडियस है लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी कलेक्शन सेंटर वो इसी एरिया में। और ये आप आते हैं, आप कह रहे थे आप ऑलमोस्ट 10-12 साल से आ रहे हैं? मैं लगभग सर यहाँ पे 10-12 साल से तो ये सब सेंटर कितने टाइम में आए? इसी टाइम में? ये लगभग सर 3 या 4 साल के भीतर आया। पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिलायंस था, उसके बाद में बिग बाजार आया। But their scale remains small. ऑन एन एवरेज प्रतिदिन इस सेंटर में से कितना माल आप उठाते होंगे? लगभग यहाँ अगर मैं अभी नॉन सीजन चल रहा है तो लगभग यहाँ से 2 या 3 टन के आसपास जाता है और सीजनली जो जाता है लगभग 7 to 8 टन है पर डे? पर डे। The approximately 14 collection centers here collect about 40 tons of vegetables a day. About a fourth of the 160 tons that comes to just the one main Panipat Mandi every day. Now, while it's true that, as we just heard, collection centers like these have proliferated across the district, many players are here, overall, they still constitute a very small fraction of the retail spectrum. Farmers here tell us that many a times they have to go back to the mandis to sell the surplus produce that they have, that these big private players haven't procured from them. Right, and I think that's the big question. Will the new farm bill change that? Will we see a far more significant presence of private players in the Indian countryside, or will the status quo remain? At the main Panipat Mandi, we meet a farmer who has just sold his bhindi. भिंडी आप ये लेके आए हैं यहाँ पे? अच्छा, तो भिंडी कितने की आपने बेची है? 12 किलो। 12 रुपए किलो बेची जी। 12 रुपए किलो? बड़ी वाली जो छोटी वाली वो 14 रुपए बेची। अच्छा, 12 और 14 रुपए। Why has he come here instead of a collection center? ये बताइए किसान भाई कि आप हमेशा मंडी में ही बेच रहे हैं शुरू से? मंडी में। तो जैसे यहाँ आसपास बहुत सारे कलेक्शन सेंटर भी खुल गए, हाँ जी, हाँ। प्राइवेट वालों के, रिलायंस है वगैरह है, वहाँ आप नहीं जाते हैं? नहीं, वहाँ मतलब ऐसा है ना जी, चले तो मेरे गांव के 1-2 आदमी चला भी गया, हाँ। वो भिंडी मांगते हैं बिल्कुल निक्की, ये छोटे वाली भिंडी भाई साहब इधर 20 रुपए किलो बिकती है। ये ना ये भर रहे हो, ये छोटी भिंडी थी तो 20 रुपए आड़ते बिकती है वो भिंडी। अच्छा, और एक बड़ी रेट वाली होता है, 20 वाली तो उसको पड़ते बेचनी पड़ती है। नहीं सारी आप भिंडी कह रहे हो वाला जो नहीं है। कलेक्शन सेंटर वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो क्या वो सिर्फ छोटी वाली वो मांगते सिर्फ हैं? छोटी भिंडी मांगते हैं। ये भिंडी निकाल देंगे इसमें से। अच्छा, ये नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, इसीलिए आप यहाँ लेके आते हमारी तो हैं? यहाँ छोटी बड़ी सारी बिक जाएंगे। ये तो बाहर जाएंगे जी। आपको पूरा का पूरा पैसा मिलता है? हाँ, पूरा। अच्छा, और उसमें से कुछ कटता है, कमीशन वगैरह कुछ मेरी नहीं? मजदूरी भी नहीं कटती जी यहाँ उतारने की। और आपको सीधा क्या कैश हाथ में मिलता कैश है? मिलता है जी बिल्कुल। और तोलते हैं इसको आप ही के सामने हाँ, कैसे? मेरे सामने ये राजे कंप्यूटर का अंडा है। अच्छा, ये है। तोल के अच्छा, इसका ये 1 किलो पल्ली का केजी कटता है वजन का। हाँ। 1 किलो कटा है। The price he receives, 12 to 14 rupees a kg, is not that different from the collection center of 13.5 rupees a kg. So we came here to this mandi in Panipat and we found that at least when it came to something like bhindi, the amount that the farmers got was not that different from what they got at that private collection center.
Yes, but what the private players claim here is that their prices are indexed to the Azadpur Mandi, which is a larger vegetable market and which is used to seeing large arrivals, and hence their prices don't fluctuate as much. Right. Whereas a smaller mandi like this one, the prices are highly volatile. Okay. So in that sense, farmers are a little more vulnerable in a smaller mandi to this price volatility than they may be selling to a collection center, which has indexed its price to a bigger mandi. In the end, the reality is complex. The mandi, which the new law might make redundant, is not all bad. Equally, private players have helped farmers, but their presence is still small. When they scale up, they might either usher in the 1991 moment or might make farmers more vulnerable to exploitation. These are small farmers with small holdings. आप बताइए सबका कितना कितना जमीन है, कितने एकड़ पे आप करते हैं काम? 5 एकड़ भी सर। आपका 5 एकड़ है? 6-7 एकड़ है जी। 6-7 एकड़ है। इतना ही है जी, 6-7 7 एकड़ का। कल आपकी 5 दुकानें हैं, हो जाए कि 3 हो जाएं, 2 बंद हो जाएं, तो इमीडिएटली फिर इनका क्या होगा? आपका तो डिमांड कम हो गया। नहीं सर, ये तो फंस गए फिर। ऐसा नहीं है सर। इस मार्केट में नए प्लेयर, हमारे अलावा भी नए प्लेयर आ रहे हैं और इनकी डिमांडिंग बढ़ ही रही है, घट नहीं रही किसी भी स्थिति में। आज फार्मर जहां जो अगर 2 एकड़ पे लगा रहा था, आज फार्मर वेजिटेबल 4 एकड़ पे लगा रहा है और किसी जमाने में तो 1 एकड़ पे भी नहीं लगा रहा था। कुछ किसानों के मन में ये भय है कि जैसे अगर प्राइवेट वाले आ जाएं तो फिर प्राइवेट वाले अपना सिर्फ आपसे खरीद के फिर जब आप उन पे पूरा वो हो जाते हैं, डिपेंड करते हैं, फिर वो 2 भी दाम कम वम करके आप फिर फंस जाएंगे। ऐसा कोई खतरा है आपको? बस देखो जो तो सरकार जैसा कह रही है भाई हमारी जिम्मेवारी है, वो तो उसके ऊपर है। वजह से वो दाम फिक्स करेगी, बहुत से ऊपर ही प्राइवेट वाला खरीद दे। बस ये आपको लगता है सरकार को एक दाम फिक्स करना चाहिए कि प्राइवेट वाला इसके ऊपर ही खरीद, लाइक एमएसपी फॉर वेजिटेबल्स फिक्स रेट हो जाए, प्राइवेट जो भी खरीदता है उससे थोड़ा ऊपर ही खरीदता है। With Mariam Alavi and camera person Xavier Thomas, Srinivasan Jain for NDTV. All right, joining us tonight on Reality Check, I spoke earlier to Professor Ashok Gulati. He's been the former head of the Commission of Agriculture Cost and Prices, CACP. And I began by asking him that, Dr. Gulati, you were amongst those who said that this farm bill is going to be the 1991 moment for Indian farmers. But as our report just showed, many of these private players who are expected to come in as a result of this bill have already been there for over a decade. But their presence has barely made a difference. Well, this bill gives you a legal framework that the big players can directly buy from the farmers. Now, that was not the case in all the states of India. Maybe in one state, some permission was given, which was discretionary after, some seva. But this legal framework provides you an opportunity for the private players to directly tie up with the farmers, be they processors, exporters, organized retailers, and cut down the intermediation costs, which are pretty high. And that is where the inefficiency of the system lies. So farmer will have a better choice. No, but, it's not going to happen tomorrow that all the APMC markets will lose market. No, but when you say, Professor Gulati, it won't happen tomorrow, the point is that they have been here, as I mentioned, for over a decade. And despite that, they still constitute only 2 to 4% of the retail basket. Well, to me, if you are a small player directly buying from the farmers, you are under the radar. When the big players start coming in, it becomes a major issue and they want quantities. And the quantities... But the big players... Right, sir, but the big players, as I said, they're already here. Reliance has been there, Birla's has been there, Future Group. Almost every big player has been in retail for a while. The organized retail in this country had not been given full freedom. You remember all this debate over that, ke kirana walo ka kya hoga and all those things. So even the big retail, but the processors and the exporters. So this is the
much wider clientele for the farmer. Organized retail in this country is how much? Less than 10% in any case, right? It will take 10 years, 15 years to reach 25% of the total retail, because it requires massive investments in building supply chains all the way through from the farm to the malls and whatnot. It's not an easy thing. But do you really think that they're committed to doing that, Professor Gulati, building cold chains and so on? Because that's not happened yet. You are looking only at the organized retailers, which were in a way protected, that Big Bazaar can come, but Walmart cannot come. This is where the discrimination has been. So you did not allow actually the organized retail to take off the way it has taken off in many other Southeast Asian countries. So your retail, so there have been obstacles at every step. And I'm not talking of organized retailers just. I'm talking about major processors in this country. I'm talking about exporters in this country. The market has to give signal to the farmers that what type of a commodity is needed in the market. At present, it is more a supply push rather than a demand-driven system. And this is an opportunity to make it a demand-driven system. All right. Okay. You remain optimistic, Professor Gulati. Thank you very much indeed for joining us. Also joining us on the program, we have with us K. Ganesh. He's a promoter of Big Basket. And also Kavita Kuruganti. She's with the Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture based in Bangalore. Thank you both for being on the show. If I can just start with you, K. Ganesh, based on our report, that this is the mystery to me, that on one hand, this is being spoken of as 1991 moment. On the other hand, you and many others have been in the field for so many years, but you still not managed to make a significant dent. How is this bill going to change anything on the ground? Because a lot of the people we spoke to who are working on the ground said it's not like they've been facing any great problems until now in procuring. Yeah. So, no, I would not say that people have been facing problems in procuring, but I think the bill is very welcome. It makes life easier for the farmer, creates more transparency, better price discovery, and more importantly, we'll get lot more of private sector investments and interest in this particular area. Today, people have been operating with a APMC license. People have been operating with in a small way. Okay, right? So we'll still continue to operate. It's not that we've not been operating. We have been operating under APMC license. But what this does is opens up the market, and you will see we can have legal contracts with the farmers. We don't have to go through a middleman. We don't have to have a APMC license. It can fair enough. You're saying that what it does is, you're saying, Mr. Ganesh, that what it does is it will cut down all the red tape, perhaps even some of the taxation to try and get to the farmer. But here's what someone else who's been in big retail has been telling me, that the bigger problem is not so much the laws in terms of dealing with farmers, but the fact is that there's just simply not enough demand for the kind of organized retail that Big Basket and other companies do, that millions of Indians prefer to shop for their groceries and their food and their vegetables in a very different way. And so really it's a demand problem, which is really why all of you are still very, very small in the market. No, so Srinivasan, the fact is that organized retail is a small percentage of the total. Okay, right? That's a given fact. So what you are saying is not incorrect. It's not surprising. And like Professor mentioned, it will take, for it to go from under 10% to 50%, it will take 10 years. The size of the market is large. Okay. So and even in US, if you take, for all the hype that e-commerce and Amazon has got, online retail, forget online, is a fraction. It's around 10% of the total. So that will always be there. But look at the positive point. Pre-COVID to post-COVID, e-commerce has more than doubled. Big Basket has more than doubled.
So the moment is coming in now. Right. Now with these laws opening up, with transparency coming the up. moment is and coming now. For exports. Let me... For exports. Okay, let me get Kavita Kuruganti. Fair enough. Kavita Kuruganti, on one hand, it may perhaps be an exaggeration to say, at least at the moment, that this is some kind of 1991 inflection point. On the other hand, are those of you who are concerned about the bill also somewhat exaggerating the damage it will do? Because while some farmers definitely are protesting, and particularly those who deal with MSP crops, a lot of others, like the vegetable farmers we met, aren't. And they seem quite happy with selling to private players. I think you have hit the nail on its head. There is a differential sort of approach that is needed for perishables and non-perishables. And those who've been dealing with farmers markets and agricultural markets have always been saying this. And in India, there are at least 17, and if I'm not mistaken, maybe even 20 states, which have deregulated fruit and vegetable markets quite some time ago. And it's not just the 1991 moment. You've been saying again and again that they've been around for more than a decade. There has been a 2003 Model APMC Act that the center has brought out. And many, many states have already made reforms along the lines suggested to them. Private markets have been allowed. Single license trading within a state has been allowed. People have come into electronic trading. Many things have changed on the market front. And if you're talking about the private mandi example that you have gone to, come down to South India and I'll show you right to bazaars and Ulavar Santai, where farmers directly sell to consumers and the government has invested on it, and 95 to 97% of the retail price goes to the farmer directly. So there are options and options. Ultimately, in these options, what is it that farmers are asking for? They're saying that it's not about market channels that they want to debate about. They're saying even if you buy at the farm gate,